Hello friends, it's Nandavardhan here from Fewer Developers. I am here with a new video tutorial of CSS. Let's start the video. In this video, we'll learn about CSS Border Images. CSS Border Images. With the CSS Border Image property, you can set an image to be used as the border around the element. ठीक है? CSS Border Image property. The CSS Border Image property allows you to specify an image to be used instead of normal border around an element. The property has three parts: the image to use as the border, where to slice the image, define whether the middle sections should be repeated or stretched. We will use the following image called border.png. ठीक है? The border image property takes an image and slice it into 9 sections like tic-tac-toe board. It then places the corners at the corners, middle and section are repeated or stretched you specify. For border image to work, the element needs the border property set. Here the middle sections of the image are repeated a created border. जैसे now see here. आईडी बना दो बॉर्डर img, ठीक है? इसमें लिख दो border image URL border.png 30 round, ठीक है? Now क्या करना है? Here is the original image. सेव आप CSS बनाओ. Border img border 10 pixel solid transparent padding 15 pixel border image URL में दे देंगे हम border.png 30 round, ठीक है? अब देखो रन करके
आ रहा है? बॉर्डर देखा कैसे आया है? ये हमारा ओरिजिनल बॉर्डर है, ओरिजिनल इमेज है। ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है। अब here in the middle section of the image are stretched create border। कैसे? देखो, जहां से हम राउंड बनाया तो वो एक रिपीट 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 होता है ना। देखो अब हम बना रहे id equals to border img2 सॉरी 1, ठीक है। stretched border image, ठीक है। अब img1 का वो बना दो css। देखो बाकी सब सेम है, कॉपी करो img1 और यहाँ पे राउंड की जगह स्ट्रेच कर दो, स्ट्रेच। सेव करो और रन करो। देखो इसमें राउंड मतलब दूसरा मतलब तीसरा जितना वो हमने विड्थ दिया, बॉर्डर 10 पिक्सल का दिया, वो ऐसे ही 30 राउंड्स पूरा बना दिया। अब ये क्या है, इसको हमने देखो अब बनाएंगे हम दो और, जैसे मैंने उसमें सेव किया, ठीक है। अब यहाँ परसेंटेज दे दो 20% और 30%। देखो क्या आएगा, देख रहे हैं ये इसमें और इसमें फर्क देख रहे हैं, ठीक है। ये मतलब दिख रहा है कि ये राउंड हो रहा है, इसमें ये दिख ही नहीं रहा कि ये राउंड हो रहा है, ठीक है। ये होता है बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी ऑफ border image property in css। So guys, thank you for watching this video. I will come up with next topic in the other video. Till then, subscribe my YouTube channel, like the video and comment if you have any doubts about the topic.